कांस्टेंट इज अलाउ ऑफ द कॉपर एंड निकल। जो कांस्टेंट एक अलाउ है कॉपर और सल्फ निकल का। तो कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी नेम ऑफ द कॉपर निकल अलाउ। कॉपर निकल अलाउ इज कॉल्ड यूरिका advanced and Ferrari. It usually consists of the 50% of carbon, 40% of nickel, 50% of carbon, 40% of nickel. Its main feature is a low thermal variation of resistivity, which is a constant over a wide range of temperature. Which of the following river is known as Puruswani in the Vedic period? पुरुषवानी इज द वेडिकल पीरियड में किस रिवर को कहा जाता था? वो कहा जाता था रवि रिवर को। Which tale are related with the painting and sculpture of the Ajanta caves? तो जटाका टेल्स। Which tales are related? कौन सी टेल रिलेटेड है पेंटिंग एंड जो अजंता के नाम में पेंटिंग और स्कल्पचर्स बने उसकी कौन सा है? तो जटाका टेल्स। द अजंता कर्व कंस्टिट्यूट एशियन मोनेस्ट्री एंड वर्शिप हॉल डिफरेंट बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल कवर्ड विद 75% to 46 wall on the roof. Next, pedology is the science of soil. Pedology is related to soil. Pedology related to soil. नेक्स्ट है वो अमंग द फॉलोइंग इनिशियल दीन ए इलाही। दीन ए इलाही किसने इनिशिएट किया था? तो वो अकबर ने इनिशिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेक्शन एंड इंडेंजरस स्पीसी प्रिजर्विंग द इंटायर इकोसिस्टम इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजरस स्पीसीज बाय preserving the entire ecosystem is known as acute conservation. The executive conservation is the preservation of the compound of biological diversities outside of the natural habitat. Wings India 2020 is scheduled to be held in which of the following airport? तो बेगुमपट एयरपोर्ट कहाँ पे? बेगुमपट एयरपोर्ट में। Wing India 2020 flagship event of the India civil aviation industry which held in a Binked Airport Hyderabad 12 March 2020। नेक्स्ट है हमारा which of the following is not a vertebrate? तो मैमल है फिश और बर्ड। ये सब तो जिनकी जो बोन्स होती जो पीछे की बैकबोन हो कार्टिलेज बोन है बट स्नेल की नहीं होती है। तो वेटिलेज इज एनिमल वो एनिमल होते हैं विद द स्पाइनल कॉर्ड इज अराउंड सराउंडेड बाय कार्टिलेज और बोन। The word come from vertebrates bone that make up to spin. Animals that are not vibrant is called invertebrates. Vibrated including bird, fish, amphibian, reptile, mammal. Snail is not vibrate. Which of the following is the major component of the vinegar? तो एसिडिक एसिड मेजर कंपोनेंट में क्या होता है विनेगर में? तो एसिडिक एसिड होता है CH3COOH। Which of the following gland is present between the lungs? Thymus। विच ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट इन दी लंग्स? जो लंग्स के अंदर हमारा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? तो थाइमस प्रेजेंट होता है। द थाइमस ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड योर स्ट्रेनरम एंड बिटवीन योर लंग्स इज ओनली द एक्टिव अंटिल द पुबर्टी। आफ्टर पुबर्टी द थाइमस स्टार्ट टू स्लो श्रिंक एंड बिकम द रिप्लेस बाय फैट। गौरीशंकर गुरुस्वामी सोनम पिल्लाई प्रसन्ना अस्थेंटी आर द फेमस पेयर ऑफ द विच इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो गोस्वामी शंकर है गुरुस्वामी सोमन पिल्लाई प्रसन्ना अस्थेंटी किससे रिलेटेड है? तो ये तंबूरा से रिलेटेड है। The Goswami and player are the tambula musical instrument. Some of the other famous are Nellai Krishna, Indra Sheshdari and Helen Franz. The word musical instrument is known as Tanpura. Tanpura instrument are three type design: Miraj style, Tanjora style, Tamburi style. Which geological park has become the first geo in the India to receive ISO 9001 to 2015 quality management standard certificate? नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद को क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया। एक्रेडिटेशन सर्विस फॉर सर्टिफाइड बॉडी यूनाइटेड किंगडम द्वारा।
नाउ दिस जियोलॉजी पार्क हैज़ बिकम द फर्स्ट जू ऑफ इंडिया, ऐसा फर्स्ट जू होगा इंडिया का जिसे ISO स्टैंडर्ड रिसीव सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। तो नेहरू जियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड इन हैदराबाद, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैचुरेटेड बॉडी, विच फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड बॉडी। तो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ सैचुरेटेड बॉडी, थ्रू इट ड्राइव इट अ पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस Establishment Act, Delhi Police Special Police Establishment. National Human Rights Commission is the statutory body formed under the Protection of Human Rights Act 1993. The Central Governance Commission is a statutory body under the CVC Act 2003. The Security Board, Exchange Board of India, statutory body under SEBI Act 1992. Which country will host 2030 Asian Game? Qatar. Which country will host 2030 Asian Game? Qatar. Doha. Qatar will host the 2030 Asian Game. Qatar will also host the 2020 World Cup 2030 Asian will be held Riyadh, Saudi Arabia. What was the real name of Toyota Top? The real name of Toyota Tope was Tatya Tope. What is the real name of Tatya Tope? तो रामचंद्र Panduranga is a Tatya Tope. Tatya Tope was the leader of the massacre of Kraunpur, which is occurred in 27 June 1857. It activity participated in rebellion of 1857. He was the personal attendant of Nana Sahib. He was the executive of British government at Shivpuri on 18 April 1859. Which of the following has launched India is the first fully indigenous development pneumococcal vaccine, Pneumocil? तो Serum Institute of India has launched the first fully indigenous Pneumocil is a development through the collaboration among the Bill and Melinda Gates. Which part of the Constitution provide the emergency provision? तो part 18 article 352 to 360 part this as the Constitution deal with the emergency provision of the and the provision borrow from the Germany. These provisions are borrow from the Weimar Constitution of Germany. The constitutional stipulate following three type of emergency: article 53, 56, 360. तो international emergency, state financial and emergency. Which union territory has become the first union territory to become 100% organic zone? तो लक्षद्वीप. Which union territory has become the first union territory to become 100% organic zone? तो लक्षद्वीप. Lakshadweep after Sikkim has become first union territory to become 100% organic region. In this region, farming is carried out without the use of pesticides and synthetic fertilizer. In 2003, Sikkim became the first state to announcing adoption of organic farming. Punjab National Bank established in 1894. Punjab National Bank was established in 1894. Punjab National Bank was founded on 19 May 1894. Headquartered in New Delhi. Which city is known as a Petersburg of the India? Jamshedpur. Petersburg in India. Jamshedpur is also known as Petersburg or India. It is the highest producer of iron and steel in India. Jamshedpur is one of the most populous urban area named after the Tata and the founder group. It located in Chota Nagpur Plateau. The first plant the Tata Group is Tesco is in Jamshedpur.